Hello everyone and welcome back to my playlist of Head and Neck Anatomy. Today we are going to start chapter number 17 which is about the anatomy of tongue. Okay, बीडी 84 हम पढ़ रहे हैं और authors इस chapter का start होते ही they have gone a little poetic. जरा सुनिए क्या खूबसूरत लाइन लिखी है. Tongue is not steel yet it cuts. Wow, वो एक शेर का मिसरा है कि ज़बां शीरीं तो जहां गिनी. इसका बेसिकली मतलब ये है कि जबान अगर मीठी हो, अगर आप किसी से अच्छे मीठे शब्द बोल रहे हो, मीठी बातें कर रहे हो, तो पूरी दुनिया आपकी दोस्त बन जाती है. द होल वर्ल्ड स्टार्ट्स लविंग यू. ओके, एंड दैट्स काइंड ऑफ वेरी ट्रू. इट रियली मेक्स डिफरेंस कि आप किससे किस तरह बात कर रहे हैं. सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हाउ यू टॉक टू डिफरेंट पीपल. ओके, एंड एक और फिर यहाँ पे वाह जबरदस्त मुहावरा लिखा हुआ भाई, टेस्ट मेक्स वेस्ट. वेल दैट्स गुड वन है. टेस्ट मेक्स वेस्ट. भाई जितना टेस्टी टेस्टी चीजें टेस्ट करोगे उतना आपका वेस्ट का जो साइज है, सरकमफ्रेंस, वो बढ़ता चला जाएगा. कभी समोसा खा रहे हैं, कभी पकौड़ियां खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं. सो टेस्ट के चक्कर में खाते जाएंगे और वेस्ट बढ़ती जाएगी. ओके, सो ये तो बड़ा पोएटिक सा स्टार्ट हो गया इस चैप्टर का. आइए अब इस चैप्टर को जरा एनाटॉमिकली स्टार्ट करते हैं. सो टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन. इट इज अ वेरी मस्कुलर ऑर्गन बिकॉज इट इज ऑल मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स बेसिकली. It is situated in the floor of the mouth. It is associated with the functions of, now what are the important functions of tongue? Okay, taste is one of them. Speech, it is a very important component of the whole speech mechanism. Tongue also helps in chewing and mixing food contents with saliva. It is also very important in propelling the food into esophagus. खाने के पूरे प्रोसेस में जिसमें च्यूइंग है, उसके बाद जो अगला प्रोसेस है उसका नाम है डेग्लूटेशन, जिसमें टंग बेसिकली फूड बॉलस को जो आपके मुंह में निवाला होता है उसको पुश करती है टुवर्ड्स द esophagus. Okay, and another important function is cleansing of mouth. We will because it keeps on moving, so different parts में इसकी अप्रोच होती है टंग की. सो इट कीप्स ऑन क्लीनिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर ओरल कैविटी. सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ टंग. ओके, नाउ टंग कंप्राइजेज ऑफ स्केलेटल मसल्स विच आर बेसिकली वॉलंटरी. और वॉलंटरी का मतलब ये है कि जब आप चाहें तब बात करते हैं, तो दे आर अंडर योर कंट्रोल. जब आप चाहें तो टंग मूव करते हैं. इट्स नॉट लाइक योर कार्डियक मसल्स विच आर इनवॉलंटरी. आपके चाहने न चाहने से उनकी कॉन्ट्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. टंग हैज द मसल्स विच आर वॉलंटरी मसल्स. ओके, एक और मुझे ऐसा लग रहा है ये चैप्टर जब ऑथर्स लिख रहे थे बीडी 84 साहब, तो ही वॉज इन अ वेरी फनी मूड. जरा ये देखिए, दीज वॉलंटरी मसल्स स्टार्ट बिहेविंग एज इनवॉलंटरी इन द क्लासरूम. फनी, यानी क्लासरूम में टीचर बेचारे पढ़ा रहे होते हैं स्टेज पर खड़े होके और आप अपनी बातों को कंट्रोल ही नहीं कर सकते क्योंकि क्लासरूम में आपकी टंग में जो स्केलेटल मसल्स हैं वो एक्चुअली इनवॉलंटरी हो जाते हैं. दे आर नॉट अंडर योर कंट्रोल. दैट्स अनदर फनी स्टेटमेंट. सो आई वंडर ये चैप्टर ऑथर ने किस मूड में लिखा है. एनीवेज, thanks to, and it continues, the hilarious bits continue. सुनिए, thanks to the taste buds that the multiple hotels, restaurants, fast food outlets, चाट पकौड़ी शॉप्स एटसेट्रा आर फ्लरिशिंग. सो अगर ये टेस्ट बर्ड्स ना होते तो ऑब्वियसली आपको सारे खाने एक ही जैसे लग रहे होते, आपको कोई टेस्ट का आता पता नहीं होता, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते कि किस जगह जाके समोसा खाना है, कहाँ चाट पकौड़ी खानी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो उन तमाम का बिजनेस बढ़ रहा है आपके टेस्ट बर्ड्स की वजह से, आपकी टंग की वजह से. ओके, सो वन नीड नॉट टू बी टू फजी अबाउट द टेस्ट ऑफ द फूड. न्यूट्रिशनली इट शुड बी अ बैलेंस्ड डाइट. नाउ इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखिए, टेस्ट का ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको बाय टेस्ट अच्छी लग रही होती हैं. नमक ज़्यादा, नमक कम, स्वाद अनुसार चीज़ें होती हैं. किसी को नमक ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, किसी को स्पाइसेस ज़्यादा अच्छा. बट एट द एंड ऑफ द डे इट रियली डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज द क्वालिटी ऑफ द फूड दैट यू आर कंज्यूमिंग. उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, प्रोटीन्स कितने हैं, फैट का कंटेंट क्या है. एंड इट शुड बी अ बैलेंस्ड डाइट बिकॉज टेस्ट इज अ सेकेंडरी स्टफ. स्पाइसेस फॉर एग्जाम्पल does not contribute to your caloric count. Spices are not protein. Spices are not carbohydrates. And some of the things, for example, salt, it's not good in large amounts. It plays around with the blood pressure. Sugar, for example, is not good in large amounts. So taste is a secondary stuff, but many of us obviously focus a lot on taste. Okay. Anyways, now parts of the tongue. ये ऐसा लग रहा है कोई हम शायरी वायरी की क्लास कर रहे हैं इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को पढ़ के. अब कुछ एनाटमी लगने लगेगा. Parts of the tongue. टंग के कितने हिस्से हैं. सो द टंग हैज ऑब्वियसली देयर इज अ रूट which is obviously at the back side. There is a tip which you can see, it's at the front. Then there is a main body.
okay, which is curved on the upper surface, which is called the dorsum, जो आपको नजर आती है अगर अपना मुंह खोल के जबान बाहर निकाले तो सबसे ऊपर जो जबान का पार्ट नजर आता है, that is the dorsum, okay, and then there is an inferior surface which is confined to the oral part only. Now root, which is the back side of the tongue, is attached to the styloid process, listen, and soft palate above, and to the mandible and the hyoid bone. So tongue has some bony connections. ऐसा नहीं है कि it's just a piece of muscle and not present on any bone. It has some bony connections and it is important. Because of these attachments, we are not able to swallow the tongue. वरना ये पूरे का पूरा जो muscular piece है, ये आपकी बॉडी के अंदर ही चला जाता है ना, esophagus के अंदर. It is in place because it is attached to some important bones, such as it is attached to styloid process and the soft palate above, and to the mandible and the hyoid bone below. Okay, in between the mandible and hyoid bone, it is related to the genohyoid. ये हम पढ़ेंगे जब ये different muscles पढ़ रहे होंगे. अभी थोड़ी देर बाद भी ये बात आएगी. Okay. Now the tip of the tongue forms the anterior free margin which at rest lies behind the incisors. यानी अगर मुंह बंद होता है तो जो आपका tip of the tongue है, this part of the tongue is lying behind your teeth. The dorsum of the tongue is convex in all the direction. tongue की ये वाली जो surface है, the upper surface, जो आपको मुंह खोलने पे ही सामने upper surface नजर आती है, it is convex in all the directions, okay? And there are different parts. It is divided into an oral part, which is the anterior 2/3 of the tongue. Then there is a pharyngeal part, which is the posterior 1/3, and it has sulcus terminalis, which is a V-shaped groove, और उसके V-shaped का जो V है, the V point, यहाँ पर एक foramen होता है, एक पिट होती है, इसे नाम देते हैं foramen cecum. और ये जो foramen cecum है, it marks embryological development of different parts of the tongue. So that's an important embryological landmark. So if you look here, this is the dorsum of the tongue, this is the tip of the tongue obviously, और ये है वो V-shaped sulcus terminalis, और ये है उसका पिट, एक छोटा सा सुराख जिसे नाम देते हैं foramen cecum. तो ये तमाम स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए टंग के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. ओके, सो देयर इज एन ओरल पार्ट, देयर इज अ pharyngeal part, and the foramen cecum represents the site from which the thyroid diverticulum grows down in the embryo. Important embryological landmark. The oral and pharyngeal parts of the tongue differ in their development, in their topography, in their structure and function. So oral part and the pharyngeal part, both these parts they have different functions. Okay, और आपको ये पता होना चाहिए कि the oral part is anterior 2/3 of the tongue, the pharyngeal part is everything which is posterior 1/3 of the tongue. Okay, right, and then there is a small posterior most part. Now the oral part is also known as the papillary part of the tongue. It's placed on the floor of the mouth. Its margins are free and in contact with the gums and the teeth. Obviously it is in connection with the teeth all the time. Just in front of the palatoglossal arch, each margin shows 4 to 5 vertical folds which are called foliate papillae. Now the foliate papillae are present in the anterior part, anterior के lateral sides पे. You see these ridges, आप अपनी टंग पे देख भी सकते हैं. These vertical ridges, they are called foliate papillae. ये basically किस तरह से बनते हैं ridges, अभी थोड़ी देर में हम इन ridges के बारे में पढ़ेंगे भी. Now the superior surface of the oral part shows median furrow. It is covered with papilla, which makes it very rough. The inferior surface is covered with a smooth mucous membrane, which shows a median fold, which is called frenulum. ये जो frenulum है, वो आप अपनी जबान उठा करके देख भी सकते हैं. Basically, अगर इसको tip of tongue को थोड़ा सा मैं ऊपर उठाता हूँ, तो इसके नीचे यहाँ पे एक mucous fold नजर आता है, which is what we call the frenulum. Okay. Now, on either side of the frenulum, there is a prominence produced by deep lingual veins. More laterally, there is a fold which is called plica fimbriata that is directed forwards and medially. Now, ये जो deep lingual veins हैं, अगर आप अपनी ज़बान उठाएं और नीचे से अपनी ज़बान को देखें, तो नीचे आपको ये दो prominent venous structures नज़र आ रहे होते हैं, which are the deep lingual veins, और इनके दोनों साइड पर ये plica fimbriata इस तरह से. This is all you can appreciate on your own tongue. ठीक है, मुंह खोलें, ज़बान को उठा के देखें, तो ये निचला हिस्सा है ज़बान का, ज़बान की अंडर सरफेस है, inferior surface. और ये वाली जो डायग्राम यहाँ पर दिखाई है, this is the dorsal surface, upper surface of your tongue. Okay, now the pharyngeal part, तो पहला पार्ट था oral part,
फिर उसके बाद है pharyngeal part. Pharyngeal part is also known as lymphoid part of the tongue. It lies behind the palatoglossal arches and sulcus terminalis. Sulcus terminalis मैंने आपको बताया था, this is the sulcus terminalis. So sulcus terminalis के ये आगे का जो part है, this is the anterior part, obviously the oral part of the tongue. और इसके पीछे का जो part है, this is what we call the pharyngeal part of the tongue. Okay, its posterior surface, sometimes called the base of the tongue, forms the anterior wall of the oropharynx. जो पीछे ये पूरा सिस्टम इस तरह से बनता है कि यहाँ पे पूरा pharynx है. So ये pharynx का anterior wall में टंग का posterior part है. वाह क्या बात हुई, शायरी चल रही है इस चैप्टर में. The mucous membrane in the pharyngeal part has no papilla but has many lymphoid follicles that are collectively known as lingual tonsils. Mucous glands are also present. Now lingual tonsils are present in the posterior part of the tongue. Okay, and it is in connection with the pharyngeal apparatus, pharyngeal wall का ये पूरा connection है, and there are so many lymphoid follicles in the posterior part या pharyngeal part. That's an important anatomical finding there. Now there is a posterior most part of the tongue. It is connected to the epiglottis actually by 3 mucous membrane folds. These are median fold, and then there is one right side पे lateral fold and left side पे lateral fold. इन सबको नाम दिया जाता है ग्लोसो epiglottic fold. Glosso is the word for tongue, and epiglottic because it is connecting the tongue with the epiglottis. Therefore, it is called glosso-epiglottic fold. So there is one median epiglottic glosso-epiglottic fold, one right glosso-epiglottic fold, and one left glosso-epiglottic fold. So there are 3 folds by which tongue is basically connected to the epiglottis. On either side of the median fold, there is a depression which is called vallecula. The lateral folds separate the vallecula from the piriform fossa. Now, ये अब तक हमने जितनी बात की है, ऑल दिस इज बेसिकली टेलिंग यू कि टंग का एक बेस है, एक टिप है और एक बॉडी है. फिर टंग को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में. इट इज डिवाइडेड इनटू एन एंटीरियर पार्ट विच इज एंटीरियर टू द सल्कस टर्मिनालिस एंड अ पोस्टीरियर पार्ट, एंड देन इट इज अ पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट. जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है वो बेसिकली ये वाला पार्ट है, और इस पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट में म्यूकस फोल्ड्स हैं. सो देयर इज वन मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड, देयर इज लेटरल glosso-epiglottic fold on right side as well as on the left side. इन glosso-epiglottic folds का काम क्या है? टंग को किसके साथ कनेक्ट करना? एपिग्लॉटिस के साथ कनेक्ट करना. ओके, सो बेसिकली इस डायग्राम पे हर स्ट्रक्चर यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि क्या है. अब बात को आगे बढ़ाते हैं. लेट्स सी व्हाट दे हैव mentioned in the clinical anatomy stuff. Glossitis is obviously inflammation. Iris is the word we always use for inflammation. So tongue की inflammation is glossitis. Glossitis is usually not stand alone entity नहीं होती. It's part of the general inflammation of the tongue or different parts of the oral cavity. अगर generalized mouth cavity का पूरे inflammation है या stomatitis है, so उसका एक feature glossitis भी हो सकता है. Okay, now tongue basically is provided with rich blood supply and rich lymphatics. इसीलिए जब tongue में inflammation होती है तो it actually swells up, काफी ज्यादा फूल जाती है, सूज जाती है. Okay, ये एक इंपॉर्टेंट बात है. अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि अंडर सरफेस ऑफ द टंग इज ऑल्सो अ गुड साइट टू सी जॉन्डिस. यूजुअली हम जॉन्डिस कहाँ देख रहे होते हैं? यूजुअली वी आर लुकिंग जॉन्डिस इन द बल्बर कंजक्टिवा, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ गुड प्लेस, द अंडर साइड ऑफ द टंग. तो पेशेंट को आप कहें जरा जबान ऊपर उठाइएगा, मुंह खोल के जबान ऊपर करें तो नीचे आप जॉन्डिस देख सकते हैं. इट रिफ्लेक्ट्स देयर एज वेल. Now, in unconscious patient, this is important. Tongue may fall back and obstruct the air passage, which can complicate management of an unconscious patient. Therefore, ऐसे patients में usually tongue को mechanically बाहर pull करके रखा जाता है. Okay. Now, lingual tonsil जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि this is collection of lymph nodes in the pharyngeal part of the tongue. They actually make a component of the Walde's ring. अभी मत पूछिए मुझसे Walde's ring क्या चीज़ है. थोड़े दिनों में ये हम obviously discuss कर रहे होंगे कि oropharynx में what is the importance of Walde's ring. Right, so that's all. ये अभी हमने general features पढ़ लिए. अब हम बात करते हैं papilla of the tongue. Now papilla है क्या? These are projections of mucous membranes or corium which gives the anterior 2/3 of the tongue its characteristic roughness. So they are highly pronounced in the anterior 2/3 of the tongue. There are following 4 types of these papilla या projections. The first one is known as valate,
or circumvallate papilla. They are very large in size, 1 to 2 millimeter, so that's a very large size in diameter, and 8 to 12 in number. They are situated immediately in front of the sulcus terminalis. Each papilla is cylindrical projection surrounded by circular sulcus. The wall of the papilla have taste buds. Let's look up for them in the diagram. So this is the diagram where they are showing circumvallate papilla. So first of all, let us locate where is sulcus terminalis. This is sulcus terminalis, और sulcus terminalis के बिल्कुल आगे ये छोटे छोटे जो papilla हैं, these papilla are called circumvallate papilla. Okay, so they are these large, actually छोटे छोटे नहीं हैं, they are very large papilla, 1 to 2 millimeter in diameter हैं, और हैं भी काफ़ी सारे, 8 से 12 हैं total. ठीक है, so that's the first category of papilla. The other papilla are called fungiform papilla. They are numerous near the tip and the margins of the tongue. So tip पर होते हैं और margins पर होते हैं, but some of them are also scattered over the dorsum of the tongue. These are smaller than vallate papilla but larger than the filiform, जो भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे. Each papilla consists of narrow pedicel and a large rounded head. They are distinguished by their bright red color. So they are bright red in their color. They're shown in this diagram. So you see these are the circumvallate papilla, the large ones, but the fungiform papilla is smaller, and this is the histopathological image. Okay, they are usually not very clearly visible if you want to see them with the naked eye. The third form of papilla are called filiform papilla or conical papilla over the pre-sulcal area of the dorsum of the tongue and give it characteristic velvety appearance. They are the smallest and most numerous of the lingual papilla. सबसे ज़्यादा यही होते हैं और सबसे छोटे भी हैं. Each is pointed and covered with keratin. The apex is often split. This is too much detail. याद रखने की ज़रूरत नहीं है. Okay. Then the next category of papilla is foliate papilla. They are present at the lateral border just in front of the circumvallate papilla. Foliate papilla. Okay. They are leaf shaped, and that's all basically about these papilla. Let me see. यहाँ इन्होंने foliate papilla. Yeah. So they have actually marked it. जहाँ पे circumvallate papilla खत्म होते हैं, वहाँ ये vertical ridges lateral side of the tongue पे you can see these papilla, foliate papilla. Okay. So sulcus terminalis के सामने जो papilla हैं, first papilla which are circumvallate papilla, these ones. Then we have circumvallate papilla के सामने lateral sides पर foliate papilla. Then this is the area for filiform papilla, and then towards the lateral margins of the tongue fungiform papilla. So ये चार papilla आपको पता होने चाहिए टंग पर, और ये इनकी locations हैं, all of them, right? अब बात को आगे बढ़ाते हैं. Let us now talk about कि what are the different muscles in the tongue. So what we have been discussing up till now is how the tongue looks like. उसके different components क्या हैं, उसमें कौन कौन से papilla हैं different, और उन papilla की location क्या है. अब कुछ बात करते हैं muscles के बारे में, क्योंकि हमने start में ये बात discuss की कि tongue is a muscular organ. So let us talk about कि वो कौन से muscles हैं जो बहुत important है. A middle fibrous septum divides the tongue into right and the left half. So internally it is basically divided into two halves, right and left. Okay. Now each half contains 4 intrinsic and 4 extrinsic muscles. मतलब 4 वो muscles हैं जो within the tongue हैं, उनका origin, insertion सब कुछ, और 4 ऐसे हैं जो बाहर से कहीं से आ रहे हैं और tongue में आके connect हो रहे हैं, यहाँ attachment हो रही है उसकी. Such muscles are called extrinsic muscles. तो total 8 muscles होंगे, क्योंकि हम बात ये कर रहे हैं कि if this is somebody's tongue, तो internally it is divided by a septum into a right half and a left half, और हर half के अंदर there are 4 muscles which are into the intrinsic category and 4 muscles which are into the extrinsic category. So 4 extrinsic, 4 intrinsic on the right side, and 4 extrinsic, 4 intrinsic on the left side. So on each side there is a total of 8 muscle, and if you want to talk about the total number, that is going to be 16. Okay. Now, what are the intrinsic muscles? They occupy the upper part of the tongue, and they are attached to submucous fibrous layer and to the median fibrous septum. They alter the shape of the tongue. So that's the basic job of these muscles which are intrinsic. They alter the shape. Now here, if you look at this diagram, coronal section of the tongue showing an arrangement of the intrinsic muscles and the extrinsic muscles. Okay. Now the names of intrinsic muscles, first one is superior longitudinal muscle. Superior longitudinal muscle arises from the fibrous tissue deep to the mucous membrane on the dorsum of the tongue, and
the midline lingual septum. They pass longitudinally back from the tip of the tongue to its root posteriorly. It inserts into the overlying mucous membrane. The superior longitudinal muscle acts to elevate the tip, elevation of the tip of the tongue and sides of the tongue superiorly. This shapes the tongue's dorsum into a concavity. जबान बाहर निकाल के अगर concave कर लेते हैं बाज लोग, so that is because of this and it shortens the tongue. अब देखो एक आप चीज नोट करो, इस मसल को हमने कैटेगराइज किया है एज ए इंट्रिंसिक मसल, इसीलिए ये स्टार्ट भी इसका ओरिजिन जो है वो भी है फ्रॉम द सेप्टम ऑफ द टंग और इसका इंसर्शन भी है इनटू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द टंग. सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मसल. ओके, आपको मसल का नाम पता होना चाहिए, उसकी एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पता होना चाहिए. द अदर इंट्रिंसिक मसल इज inferior longitudinal. Now ये था superior longitudinal and this is now inferior longitudinal. It originates from the fibrous tissue beneath the mucous membrane. Similar origin है, stretching from the tip of the tongue back to the root तक जाता है. And hyoid bone, they insert into mucous membrane of the tongue, और ये भी mucous membrane of the tongue में insert हो रहा है. It lies between the two muscles. अभी इनका जिक्र चूंकि किया नहीं तो मैं इनकी डिटेल नहीं बता रहा, अभी आगे आएगा. द inferior longitudinal muscle, इसका काम सुनिए. It acts to curl the tip of the tongue inferiorly. This makes the dorsum of the tongue convex, more convex in shape and shortens the tongue. Now सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल ऊपर की तरफ खींचता है टंग को और टिप को ऊपर की तरफ लेके जाता है, इंफीरियर नीचे की तरफ लेके जाता है. सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर. देन देयर आर ट्रांसवर्स मसल्स. It lies as a sheet on either side of the midline in a plane that is deep to the superior longitudinal muscle but superficial to genioglossus. They run transversely from their origin at the fibrous lingual septum to insert into the mucous membrane. ये भी fibrous septum से निकल रहे हैं और mucous membrane में attach हो रहे हैं. Contraction of the transverse muscle act to narrow and increase the thickness of the tongue. आप अगर टंग को थोड़ा सा पीछे कर लें तो टंग मोटी सी हो जाती है. That is because of this muscle. And then there is fourth intrinsic muscle which is called the vertical muscle. It is found at the borders of the anterior part of the tongue. It makes the tongue broad. तो अब इस डायग्राम पे देखें, इंट्रिंसिक मसल्स आइडेंटिफाई करते हैं. देयर इज सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल, देयर वाज inferior longitudinal muscle, there was vertical muscles and transverse muscle. तो ये चारों जो मसल हैं 1, 2, 3 and 4, all of these muscles, the transverse muscle, the superior longitudinal muscle, the inferior longitudinal muscle and the vertical muscle, they are all intrinsic muscles. ठीक है? Then the extrinsic muscles are genioglossus, hyoglossus, styloglossus and palatoglossus. The extrinsic muscles connect the tongue to the mandible via genioglossus connection to the mandible, to the hyoid bone via hyoid bone, to the styloid process via the styloglossus and the palate via the palatoglossus. तो ये याद रखना भी कितना आसान है, जरा देखें. चार जो मसल्स हैं वो टंग को किन किन चीजों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. मैंने आपको बताया था ना, बोन्स के साथ अटैच होती है टंग ताकि फॉल बैक ना कर जाए. तो जो जीनोग्लोसस है ये मैंडिबल के साथ अटैच करेगा. हायोग्लोसस विल अटैच इट विद द हायोइड बोन. स्टाइलोग्लोसस नाम में जाहिर है स्टाइलो, सो स्टाइलोइड प्रोसेस. एंड पैलेटोग्लोसस विद द पैलेट. इजी बीजी स्टफ. एक्शंस के भी बात करते हैं थोड़ी देर में कि इन मसल्स के actions basically क्या हैं, and they are nicely summarized in the tables. Let's have a look at table number 17.1 and then also 17.2. First, इसको पहले देखते हैं. Intrinsic muscles चार थे, 1, 2, 3 and 4. चारों के फंक्शंस हमने पढ़े. सुपीरियर का मैंने आपको फंक्शन बताया, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल का कि it shortens the tongue, makes the tongue more concave and moves the tip of the tongue upward. Inferior moves the tip of the tongue downward, making it more convex. Transverse, elongated and narrow tongue, and vertical, broad and flattened tongue. Okay? Now, genioglossus is important. ये किसके साथ कनेक्ट कर रहा था टंग को? मैंडिबल के साथ. It is important for protrusion of tongue. Hyoglossus, hyoid bone के साथ depression of tongue. Styloglossus, styloid process के साथ retraction of tongue, and palatoglossus, palate के साथ elevation of tongue. So that is important table for you to remember. इसको बार बार पढ़ो यार, याद करो इसको, ये एग्जाम के लिए important चीज है. ठीक है?
पैलेटोग्लोसस, हाइग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस एंड जीनोग्लोसस, इस सबको देख के मुझे साफ समझ में आ रहा है कि दे आर टॉकिंग ओनली अबाउट दी एक्सट्रिंसिक मसल्स हेयर, और उन एक्सट्रिंसिक मसल्स का ये ओरिजिन बता रहे हैं, इंसर्शन बता रहे हैं और उनके एक्शंस बता रहे हैं। एक्शंस हमने यहाँ इस टेबल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि जीनोग्लोसस इज फॉर प्रोट्रूशन ऑफ टंग, हाइग्लोसस इज फॉर डिप्रेशन, स्टाइलोग्लोसस इज फॉर रिट्रैक्शन ऑफ टंग, पीछे करना टंग को, पैलेटोग्लोसस इज एलिवेशन ऑफ टंग. Okay, easy peasy stuff. Now let's talk about what is the arterial supply of tongue. Arterial supply is by a very tortuous artery, यानी ऐसे घूमती फिरती यूं आर्टरी होती है, straight artery नहीं होती. It's the lingual artery, a branch from the external carotid system. The root of the tongue is also supplied by the tonsillar artery, which is branch of the facial artery, and ascending pharyngeal. So pretty rich blood supply basically. Venous drainage is via the deep lingual veins, जो मैंने आपको अभी इस डायग्राम में दिखाया था कि they are present on the inferior side of the tongue. The deep lingual veins, that basically is the chief vein of the tongue seen on the inferior surface of the tongue. Vena cominens accompany the lingual artery. जो lingual artery की territories थी उसी से backward veins blood लेके जाएंगी और they are joined by the dorsal lingual veins. Ultimately यहीं drain करते हैं, ठीक है. Vena cominens accompanying the hypoglossal nerve as well. These veins unite at the posterior border of the hyoglossus to form the lingual vein. So ultimately जो bigger vein है वो lingual vein है, which ends in the internal jugular venous system. Okay, so that's easy, crystal clear stuff. अगर बहुत डिटेल में आपको इसकी blood vessels देखनी है, so here you see this is the tongue. ये tongue का dorsal surface है, this is the dorsal part of the tongue, and this is the inferior part. And inferior part में you can see there are deep lingual vessels, deep lingual artery and veins as well. You can see that very clearly, okay? And this deep lingual is then ultimately draining into the internal jugular system, okay? Right. What else we need to discuss is the lymphatic drainage and nerve supplies. Now, lymphatic drainage, tip of the tongue drains bilaterally to the submantle. So this is one group of lymph node जिसमें tip of the tongue drain करेगा. Then the right and the left halves of the remaining part of the anterior two-thirds of the tongue drain into the submandibular. So this is another group of lymph nodes, submantle, submandibular, and then the posterior most part it goes into deep cervical, such as jugular-digastric nodes. So these are the three lymph nodes which are receiving. The whole limb finally drains into the jugulo-omohyoid nodes. These are known as lymph nodes of the tongue. Okay, so तीन group of lymph nodes ultimately draining into jugulo-omohyoid group of lymph nodes. Nerve supply. All the intrinsic as well extrinsic muscles except the palatoglossus, important, except the palatoglossus, are supplied by the hypoglossal nerve. अब पैलेटोग्लोसस किससे सप्लाई होता है भाई? इट इज सप्लाइड बाय द cranial root of the accessory nerve through the pharyngeal plexus. इसका different nerve supply है. Okay, so 7 out of the 8 muscles are supplied by nerve number 12, which is hypoglossal nerve, and 1 is supplied by root of the accessory nerve. ठीक है. अब जो सेंसरी फाइबर्स हैं ये तो मोटर सप्लाई हो गई क्योंकि स्केलेटल मसल्स हैं. सेंसरी नर्व, लिंगुअल नर्व इज द नर्व ऑफ जनरल सेंसेशन, and the chorda tympani is the nerve of taste for the anterior two-thirds of the tongue except the valid papilla. Important है यार, ये याद रखना. बार बार इस लाइन को पढ़ो, इसमें समझाने का मुझे कुछ नहीं है, आपको याद रखना है कि जो chorda tympani है is the nerve of the taste. So nerve of the taste, the beautiful taste that you feel all the time is because of this chorda tympani, except for the valid papilla. Okay. Now glossopharyngeal nerve is the nerve for both general sensation as well as taste. So taste में एक तो chorda tympani याद रखना है, दूसरा glossopharyngeal nerve याद रखना है. But glossopharyngeal जो है it is for the posterior 1/3 of the tongue. So anterior 1/3 of the tongue. So ये वाला part जो tongue का है, if we go back to this diagram, where is it? This one. So anterior जो part है this is chorda tympani, taste sensation, और जो posterior part है this is glossopharyngeal, taste sensation. ठीक है, तो दोनों parts का अलग अलग taste sensation sensory system है, इंक्लूडिंग द सर्कमवलेट पैपिला. अभी यहाँ थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि वेलेट पैपिला जो हैं वो कॉर्डा टैम्पनी से सप्लाई नहीं होते, तो फिर किससे होते हैं? दे आर सप्लाइड बाय द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व. Right? Okay. Now the posterior most part of the tongue is supplied by the vagus nerve. Vagus nerve. Okay. Hypoglossal nerve पे कुछ comments है. Hypoglossal nerve is the nerve of the muscle of tongue. Most of them. एक ऐसा मसल था जो सप्लाई नहीं हो रहा था हाइपोग्लॉसल से, उस मसल का नाम क्या था?
पैलेटोग्लॉसस, और पैलेटोग्लॉसस किससे सप्लाई हो रहा था? क्रेनियल रूट ऑफ द एसेसरी नर्व, ठीक है। नाउ हाइपोग्लॉसल लीव्स द क्रेनियल कैविटी थ्रू द एंटीरियर कॉन्डाइलर, यार ये हम जब क्रेनियल नर्व्स पढ़ेंगे ना तब करेंगे, अभी छोड़ो इसको, कॉम्प्लिकेट करेगा खाम चीजों को। नाउ क्लिनिकल एनाटॉमी, कार्सिनोमा ऑफ द टंग इज क्वाइट कॉमन. The affected side of the tongue is removed surgically. All the deep cervical nodes are also removed, and the block dissection of the neck is performed. Carcinoma of the posterior 1/3 of the tongue is most dangerous due to bilateral lymphatic spread. So it's a common site for oral cancer. Okay. What else are they talking about? They are also talking about sorbitrate is taken sublingually. It's a drug for immediate relief from angina. So because उसकी blood supply इतनी ज़्यादा है टंग की कि वहाँ पर जो absorption है into the circulation is very quick. Okay. Genioglossus, one of the muscles, is called safety muscle of the tongue because if it is paralyzed, the tongue will fall back in the oropharynx. याद रखें, during anesthesia, the tongue is pulled forward to clear the air passage. वरना, और ये मसल है जो उसको होल्ड करके रखता है because genioglossus connects it with the palate. Now, genioglossus is the only muscle of the tongue which protrudes it forward. It is used for testing the integrity of the hypoglossal nerve. So ये important बात है यार, पेशेंट को कहो भाई अपनी जबान जरा बाहर निकालो, तो अगर पेशेंट जबान सही बाहर निकाल रहा है तो हाइपोग्लोसल नर्व ठीक है. Genioglossus is the only nerve which is used for protrusion of the tongue. Okay. So if hypoglossal nerve of the right side is paralyzed, the tongue on the protrusion will deviate to the right side. So deviation of the tongue to the side is basically indication of the side of injury. Okay. Right. हिस्टोलॉजी में नहीं पढ़ा रहा अभी क्योंकि मैं इंदरबीर सिंह से अलग से पढ़ा रहा हूँ, और डेवलपमेंट भी अभी नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये लैंग्वेज से हम डिस्कस करेंगे. सो ये दो बातें अभी हम छोड़ रहे हैं और दैट्स इट बेसिकली. अब एक चीज़ थी जो मुझे और डिस्कस करनी थी, दिस पर्टिकुलर डायग्राम. सो नर्व सप्लाई ऑफ द टंग के लिए दिस इज अ इंपॉर्टेंट डायग्राम. सो इफ यू लुक, दिस इज दी, आपको पता होना चाहिए ये टर्मिनालिस सल्कस है, ये पिट मौजूद है, तो ये जो आगे वाला पार्ट है दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग. ठीक है. एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग, जनरल सेंसेशन बाय lingual and taste by chorda tympani, और जो मोटर सप्लाई है that is by hypoglossal nerve. So anterior part की जो nerves हैं वो lingual nerve and chorda tympani और motor nerve hypoglossal. ठीक हो गया. posterior part में देखें, both general sensation and taste is by glossopharyngeal in the posterior part glossopharyngeal. ठीक हो गया. Now बिल्कुल जो posterior most part है, both general sensation and taste by the internal laryngeal nerve branches of the vagus nerve. So यहाँ पर आगे nerves अलग हैं, posterior part की nerves अलग हैं, posterior most parts की nerves अलग हैं. Okay. रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है. नर्व सप्लाई ऑफ द टंग बहुत ज्यादा कॉमनली पूछी जाती है एग्जाम. सो दैट्स ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ टंग एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो वेरी सून. हेड एंड नेक की कोई और टॉपिक को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.